नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना अंसारी और आपका स्वागत है इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. Today is a very special, very special episode that we are doing. We have one of India's most famous YouTubers in the domain of political satire and current affairs, the one and only Secularism ka CEO, Sham Sharma. So, aaj ki Sham ke saath, and evening with Sham. That's two PJs already. Welcome, Sham. थैंक्स वेरी मच यार, आपने तो इतनी तारीफ मेरी की है कि मेरे पिताजी ने भी नहीं की आज तक यूट्यूब को लेके, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। Sham, इसी बात पे actually we want to know that being a YouTuber with close to 1 million subscribers and yet being so humble, unassuming about it and not taking yourself serious, how do you do that? It comes very easy to me, thankfully, because of my parents. मेरे parents कभी भी इस तरह का, neither of my parents have any kind of airs about them, and they made very damn sure that I had no airs about me, no matter what I do. And it's funny because every time I talk to my mom and I tell her, Mom, मेरे 400,000 हो गए या 500,000 हो गए या 600,000 हो गए, she always tells me to get a real job. So keeps my feet firmly planted on the ground. But yeah, I think my whole brand, if you follow my show at all, if anybody that is watching this episode follows my show, they'll know that the entire brand is sort of built towards not taking myself too seriously. And that's the only way that I feel like I can last on YouTube. If I start taking myself seriously, then I won't be able to enjoy YouTube at all. So it's sort of just part of who I am. That's a great lesson for all the budding YouTubers. So Sham, now to something more serious. Of Sure. course, with your humor, we know you'll always get in a dash of humor in there. Sham, in the ideological spectrum, if I give you three labels, you can choose one. Like Coffee with Karan, you'll have to choose one label, right? What do you see yourself? Do you see yourself as a right winger, as a nationalist winger, or as J.Sai Deepak says, as an Indic winger? What label would you want to give yourself? Yeah, that's an interesting question because I see myself as a civilizationalist, so I suppose it fits more into the J.Sai Deepak's definition of like maybe what an Indic wing might be. However, I also feel like for a civilization to truly thrive and exist properly, you need like a national boundary where it is protected and where it is given space and opportunity to to grow and prosper. So in that sense, I'm also a nationalist, where I believe that you need to protect India and the border of India for the Indian civilization to survive and thrive. So in that sense, there's a little bit of a nationalist in there too. So I do take little bits from every little area. I think it's very difficult to put me and a lot of people like yourself, Amna, as well. I think it's very difficult to put most people in like one particular category. I think maybe 70% I'm in like the Indic wing, but then I'll take a little bit from the nationalist wing. I'll take a little bit from the right wing. So yeah, I think mostly there, but I take bits and pieces from wherever I want, essentially. Okay. So basically, you don't have any tag to, It's hard to put tags, explain yourself. right? Like even if somebody were to come and say, Ki, Acha, Amna, how do you describe yourself in the Indian context? There are so many things that you take from. You're a Right. civilizationalist. You consider yourself part of the Indian civilization. That way you're civilizationalist. You have your own independent Muslim identity that you're proud of as well. So isko ek jagah mein jabardasti घुसेड़ के shoehorn करना becomes very difficult. राइट। Yeah. तो श्याम, आपके जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट हैं, ध्रुव राठी हो गए, आकाश बनर्जी हो गए, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में सुना भी जाता है अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी देखें तो आपका उन पे क्या व्यू है? अगर उनके दो तरीके से मैं पूछना चाहूंगी। पहला तो उनके क्राफ्ट पे आपका क्या व्यू है, एंड दूसरा आप उनके आइडियोलॉजिकल लीनिंग को या उनके जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे देखते हैं? So the first question, I think on the craft part, I respect that a lot. Because YouTube पे successful होना आसान नहीं है, and आप उनका अगर वीडियो देखोगे तो it's a very well produced, very well crafted, graphics वगैरह काफी अच्छे होते हैं, and a lot of work goes into things like that. Even if मान लो they're hiring people to do those things, a lot of work goes into things like that. So I respect
the work that they put behind the video. I respect the editing and all of that stuff. I have massive disagreements with the level of research that maybe they put into the video, or क्या content होता है video का, उससे मेरे को agreement नहीं है. But you can't just become successful ऐसे ही मजाक में YouTube पे, so you have to respect the work that they've put in. And even though I think the difference between like people like you, people like me, and I think those guys is कि उनको एक institutional support है. उनके videos को हमेशा आप देखोगे बड़े personalities या फिर politicians YouTube पे, Twitter पे, Facebook वगैरह पे share करते हैं. हमारे में share करने में घबराते हैं कि कोई उनको communal ना बोल दे. So I think that's a big difference as well. But despite that, having acknowledged that difference, I still respect the craft that they've put up and the work that they do. Second part आ गई जहां तक ideology की बात है, तो उससे मैं almost 100% on the other side of the spectrum हूँ. The part where I maybe am in disagreement with the right wing as well is that कि बहुत सारे जो right wing अपने आप को describe करते हैं, they have a natural tendency to be, let's say, suspicious of Muslims. मेरे को वो नहीं है, मेरे में वो natural suspicion नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ स्कूल गया हुआ हूँ. मेरा best friend जो स्कूल में था, we were on the same football team, and so I played with him. I hung out at his house. I've hung out with his family as well. So how can I suspect a guy like that? He's still a very nice guy, even though we don't see eye to eye anymore, but he's still a very nice guy. So मेरे में वो नहीं है, because I've personally interacted and hung out with people like that. So, but on the other hand, again, I have massive disagreements in the way they are portrayed Muslims are portrayed in left-wing media. I have massive problems with how Hindus are obviously portrayed in left-wing media as well. So उस sense में मुझे obviously उनसे disagreement है काफी. श्याम, अभी आपने बात की अपने दोस्तों की कि आपके फ्रेंड थे और उनके साथ कैसे आप खेलते थे. तो इसी पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपने बचपने के बारे में कुछ बताइए. कैसे आप पले बड़े हैं, कैसा आपका बचपन रहा है? वो लोग तो कहते हैं कि मेरा बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी चल ही रहा है. बट चाइल्डहुड की अगर बात करें तो आई एम फ्रॉम बिहार, बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार. मैंने अपनी स्कूलिंग जो हाई स्कूल है वो दिल्ली से किया है, कॉलेज दिल्ली से किया है. But I'm very rooted, or very at least attached to my culture and my and from Bihar in general. And that's again thanks to my family, because I grew up in a family that was very culturally aware कि उनका culture क्या है, उनकी history क्या है, उनका civilization क्या है. And that's where I get this sort of ideology as well from. They were not a couple that were, जैसे मैंने कहा ना कि उनको किसी और से प्रॉब्लम नहीं थी. They were just very proud of who they are, but they were being proud of who you are doesn't necessarily means that you have to be anti something else. Do you know what that means? So that's the kind of environment that I grew up in. मैं जब दिल्ली में स्पेशली गया था स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वहां पर इनिशियली मैंने देखना शुरू किया कि there's a world view out there that has a completely different idea of India. उनको लगता है India is this fascist state जो भी अपर कास्ट ब्राह्मण हिंदू नहीं है उनको मारना चाहता है, उनकी सिटीजनशिप छीनना चाहता है, all of that stuff. And that obviously clashed in a big way with my own reality जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था. Then जब मैं कॉलेज में गया तो ये और भी ज्यादा heightened हो गया, because I went to Hindu college in Delhi University. Right across the street was St. Stephen's. St. Stephen's में I knew some people जिनसे जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो वो obviously झोले वाले लोग बहुत सारे हैं सेंट स्टीफेंस में. तो झोले वालों के साथ जब भी मेरी बात होती थी तो वो लोग यही बोलते थे कि तू तो अपर कास्ट ब्राह्मण है, तुझे क्या पता. मैं कहा अच्छा ठीक है, तो ये इससे बात कर ले, ये तो जाट है, ये तो ओबीसी है, इससे पूछ ले, ये तो ब्राह्मण नहीं है. तो इवन दोज पीपल वुड से कि अच्छा नहीं, ये लोग भी गलत है, बिकॉज इनको बेसिकली अप्रोप्रिएट कर लिया है तुम अपर कास्ट वाले लोगों ने. मैं कहा अच्छा ये भी नया वाला मैंने सुना, आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर. So when I was there, वहां पर मेरी ये एक दिमाग में शुरू हुआ कि अच्छा, there is an alternate idea of India that is really prevalent in certain circles, and I don't think like that. My experiences don't tell me to think like that either. तब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा इसके बारे में हो सकता है कुछ बात करनी है. जब मैं बाहर भी गया इंडिया के, वहां पर भी there was the same sort of idea जो लोगों को पता था, जो इंडियंस नहीं थे. जैसे नॉन इंडियन मेरे से हमेशा पूछते थे कि यार इंडिया में कास्ट की इतनी प्रॉब्लम है, हाउ डू यू गाइस, जस्ट हमारी डे टू डे लाइफ कैसी होती है कास्ट के प्रॉब्लम्स के साथ.
मैंने कहा यार इतनी सीरियस भी नहीं है सीरियस, इतनी सीरियस भी नहीं है कि मैं स्कूल में बैठा हुआ तो मैं अपने दलित दोस्त से बात नहीं करूंगा या मैं सबसे पहले उसका कास्ट पूछूंगा फिर उससे बात करूंगा. It's not like that. And even in the US, जब मैं जहां पर रहता हूँ वहां पर भी that kind of an idea exists. So eventually यहाँ पर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा इन सब चीजों के बारे में मैं अपने फ्रेंड से बात करता रहता हूँ, फैमिली से बात करता रहता हूँ. मे बी if I try talking to a larger audience, पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, but let me try. So that's how it basically started. हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए है आज जो आप इंडिया में एक काफी एक मुकाम है आपका, आप आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में इंडिक विंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप जैसे आप हैं और बहुत सारे मतलब अगर टॉप 100 मिले हैं, बट वी हैव टेकन इट डाउन टू 5, right? So some of them are your dear friends also, and we want to ask you your views on them. We believe that they are some of the most influential thinkers of this generation, who are shaping up the discourse, who are giving the intellectual arson to from a very humanistic but very strong conviction where they're not backing down on their identity. And the intellectual challenge to the left is being taken. So with regards to that, so we want to know, we'll tell you one person, there are 5 of them, and then you can tell us the thing you admire the most about them and the thing you disagree with their ideological worldview. So starting with, of course, the flavor of the year now, Mr. J.Sai Deepak, what is it that about his intellect that you admire immensely, and what is it one worldview of his you disagree with? I actually really admire Jay because again he's one of the few people in India that are at the vanguard of the sort of new intellectual development in the Indic wing, right wing, whatever you want to call it. People like him, people like Vikram Sampath, Sanjeev Sanyal. There's so many people who are doing like yeoman's work in this field. And so I really appreciate that. He's a smart guy, he's a sharp guy. One thing he's also done that I admire is, the idea of decoloniality that he sort of champions. The assumptions behind that idea are actually pretty sound. Okay, India has been looked at often, at least in the West and even in India to a large extent, from a colonial lens. कि जब ये colonial masters हमारे यहाँ पर आए थे, they started teaching, the people under them कि अच्छा, no, this is what India is. This is our understanding of India, and this is going to be the understanding of India going forward. And so exposing that through his book, through his works, through his speeches, I think he's done a fantastic job there as well. And I wish him nothing but success, honestly. But at the same time, if I disagree with him on one point, is that, again, maybe I'm misinterpreting his position, but I feel that he might feel that basically everything that's wrong in the Indian context or with India might just be like a colonial hangover. Okay, colonialism की वजह से ये problems आई हैं India में. For example, the caste issue. I don't know if he expressly makes this argument, but a lot of people that push decoloniality make the argument कि ये caste की जो problem है वो basically अंग्रेजों की वजह से इंडिया में आई है, अंग्रेजों की वजह से इतनी problematic हुई है. And to an extent, I agree that they exacerbated the problem. 100% they did, with martial races and all of that stuff as well. They made it worse. But this problem existed before the British as well. ये caste की जो problem है, discrimination की जो problem है, it existed before the British. Everybody knows it. And I don't think there's a problem in accepting it. When you accept a problem, it makes it a lot easier to solve. And by accepting this problem after independence, reservations वगैरह offer करके, तभी तो ये problem धीरे धीरे solve हो रही है, ameliorate हो रही है. अगर हमने अपनी आंखें बूंद ली होती अमेरिका की तरह और बोलते कि नहीं यहाँ तो racial कोई problem ही नहीं है, tension मत लो, because America never did the reservation system. उन्होंने कभी नहीं किया. उन्होंने कहा कि अब तो हमने equality declare कर दी, मतलब problem solve हो गई. We didn't do that. We accepted the problem. We said कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर reservation देना जरूरी है. तब ये problem आप देखो solve हो रही है. बीजेपी का voter base देखो, immediately you'll realize कि how the tide is turning. So that's where I think I have a small disagreement with him. Right. Number 2, Mr. 30 Seconds, Dr. Anand Ranganathan. Yeah. Anand, again, the people that you're bringing up are brilliant. They're a lot smarter than I am as well. So it's hard for me to offer criticism for people like that, who I genuinely look up to and who I think are a lot smarter than I am. But again, his interviews and the work that he does in either the political sphere or the scientific sphere. Remember, this guy's a scientist. So in that sphere, both of those spheres is brilliant. Sometimes he has the tendency to be very serious on Twitter.
I'm built a certain way that it's very difficult for me to be serious for long stretches of time. Anand sometimes does that, which, everybody is different. So I don't know if this is a criticism or if this is just a personality difference between me and him. Number three, I mean, someone who's loved and left wing would not want to say, but even they love him at times. Everyone's favorite, Abhijit Iyer Mitra, the most entertaining intellectual, the one who knows about everything under the sun. What is it that you like about Abhijit? Again, what you said, that this is a guy that never minces his words. I think this is, and it's a two-edged sword, basically, this aspect of him. Number one is it makes him so popular. It makes him so beloved. And you can never question this guy's integrity, because his integrity is intact. Iske muh mein jo aayega, ye bol dega, iska koi filter nahi hai. So maybe he can say some things that might sound very silly. Maybe he can say some things that you can be like, yaar, kya zarurat hai is tarah ki cheezein bolne ki? Ya fir have some measure of maybe, thoda तोल मोल के बोला करो चीजें, वो उसमें measure है ही नहीं. So it can work to his favor in the sense, it can work against him in the same sense as well. I remember in one of our shows when he had come and people niche likh rahe the, he could have avoided some of those. Exactly. That's like the most common comment that we get on our YouTube video. जब भी वो feature होता है कि थोड़ा differently भी बोला जा सकता था इसको, मैंने कहा नहीं, ये सर से, at his age, to expect him to change is basically impossible. Number 4, again, another dear friend of yours who I love for the depth in his conversations and the fact that he's always more about individuals than groups, Kushal Mehra. Yeah, Kushal, again, this is again another guy who I feel is smarter than me, who I enjoy listening to. I learn a lot from whenever I speak to him. The only thing that I maybe disagree with him on is he sees himself as an out and out, what's that word? Yeah, Democrat, Republican, what's the third word that I'm looking for? That he calls himself all the time. Libertarian, there we go. Dimag se nikal gaya tha. So he considers himself like a libertarian, which I, in pretty much everything, and I do in a lot of things, but in a lot of things I also don't, because I do think that the government ki jo social security programs rahi hain, they've been very successful in integrating so many people from a certain social strata or from a certain economic strata, in integrating these people into the cultural mainstream, into the economic mainstream. And I think every society, hum America mein bhi abhi dekh rahe hain, about what a strong support there is building behind like social service programs and things like that. So even America jaise desh mein, I feel like in the next 30, 40 years, those social service programs are going to be in vogue. So I don't know if his brand of libertarianism supports these kinds of social service programs, financial inclusion programs, but I 100% support them. Right. The last one is very difficult because I find him a gentle giant, like the amount of research he's done and the way he's challenged the entire leftist ecosystem, this powerful. And I love listening to him, and he's so respectful towards even his harshest ideological opponent. So we can start with the easier part, that what is it about Vikram Sampath that you admire? And what is it that you disagree with? Yeah, this is a difficult one because clearly, like you said, there's a lot to admire, right? The level of research that this guy goes into, the level of, like, if you read his Savarkar biography, the level of minute detail that he has gone into. Incredible. I mean, his book, basically overnight, has become the authoritative text on Savarkar, right? If you want to know about Savarkar, if you want to read about Savarkar, you have to read Vikram Sampath's book. That's what it has become. So it just shows you the level of research that this guy has done. And basically, him and Jay and a lot of other new young scholars that are coming up, they've essentially, India mein ek वो हुआ करता था. There used to be this thinking कि right wing में कोई intellectuals नहीं है, scholars नहीं है, इन लोगों को research करना नहीं आता, इन लोगों को बस ये श्याम शर्मा की तरह social media पे meme बनाना आता है. That's it. But now there's like a generation of people that are coming out that are doing research that rivals left-wing research, and in Vikram Sampath's case, I will argue, is better than a lot of left-wing research. So 100% props to him, lots to admire there. I was going to say that the one thing that was
is maybe he can improve on is how he responds to his critics. And पिछले 2-3 हफ्ते में तो उसने वो भी fix कर दिया है. Like the treatment that he has given to people like Audrey, that is what was exactly what was needed, and he did it. So I don't even know if I can offer that critique anymore. Sham, anyone else you want to add, like people you admire in the Indic wing? Because we just wanted to keep it to these five. So yeah, no, this it's hard to pinpoint like one or two people, but I admire anyone who is willing to come out and do work. You know, I admire you guys. I admire all the other YouTube channels that are out there, just putting out content. You know, चलो ठीक है, आप किताब नहीं लिख रहे हो, content ही बना रहे हो. In itself, that's a huge thing, because the thing about the left wing that people used to crib about back in the day is कि इनके देखो कितने सारे channels हैं, कितनी सारी news outlets हैं, कितने सारे इनके news channels हैं TV पे. You know, they would overwhelm you not just with research but also with sheer volume. And अब दूसरी side से भी हम ये देख रहे हैं कि there's research, there's quality, but there's also volume. So that other aspect of it cannot be ignored. So I'm just happy, and I'm supportive of everybody that wants to get out there, make content, whether it's a blog, whether it's a YouTube channel, whether it's Instagram, whether it's books. I support all of those guys. So Sham, usually, I mean, all lakhs of your followers and fans, they never get to ask you this. So please tell us and all those viewers, which are your 3 favorite books of all time and why? And your 3 favorite Hindi movies and why? यार हिंदी मूवीज में ना ये लोग कुछ इंटेलेक्चुअल मेरे से मांगेंगे, मेरे पास आई हैव नथिंग इंटेलेक्चुअल टू ऑफर इन हिंदी what you movies. like. I like this stuff are the best. My favorite Hindi movie of the last 15 years is Welcome. I can watch that movie at any point. कभी भी मेरे को बिठा के Welcome दिखा दो, I'll watch it. So that's one of my favorite movies. I love Hera Pheri. I loved जो गोविंदा और संजय दत्त की भी मूवीज आया करती थी ना in the 90s. हसीना मान जाएगी and जोड़ी नंबर 1. हसीना मान जाएगी, yeah. I think of that pairing, I think that is the best movie. Because they made like 4 or 5 others, but that is the best one in my opinion. Absolutely. So for Hindi movies, there you go. There's 3 Hindi movies right there for you. In terms of books, one of the books that early on had a big impact on me was Decolonizing the Hindu Mind. It was by Conrad Elst. That's a great book. I recommend everybody read that book. It's not a very long book, but it does an immense work in showing you the perspective, the Indic perspective, so to say, the Indic civilizational perspective. That book had a big impact on me. The book on Savarkar as well, Vikram Sampath Savarkar book, I really enjoyed that book because there was so much. There are 2 phases basically in like India's understanding of Savarkar. There's pre-Vikram Sampath and there's post-Vikram Sampath. Absolutely. Like post-Vikram Sampath, the understanding of Savarkar has completely changed. Whether or not you still dislike Savarkar, you're still allowed to dislike him. But at least now you can't say ki we don't understand what he was thinking. You understand very clearly Savarkar now. So that one. And the third book is a bit of an outside pick. It's a book that I read a few years ago and I really enjoyed it. It's a book by Michael Pollan called How to Change Your Mind. And it's a book that he wrote basically about psychedelics and research into psychedelics. I've developed a bit of an interest in like psychedelics, not like, synthetic psychedelics. I mean more like organic psychedelics, जो आपको mushrooms वगैरह से मिलेगा and things like that. So I have developed an interest into it, particularly because, the experiences that a lot of people recount after their experiences on psychedelics are very similar to the experiences that experienced yogis also recount. They're very similar. That feeling of interconnectedness, that feeling of that overwhelming sense of love towards everybody around you. Those are the same feelings that yogis who've been doing yoga for 10 years, 20 years, 30 years, that's exactly what they recount. So I think, now that psychedelics are really growing in popularity in the West, and I'm sure it'll proliferate eventually to Asian countries as well, I think there is some kind of an answer there in terms of we're seeing such a void in spirituality in the West. We're seeing all these battles over spirituality in Asian countries, India particularly. And I don't think mushrooms, everybody do mushrooms. That's not an answer, but I'm saying it is a gateway. It is like an introduction for people
to basically get on the same spiritual wavelength. That doesn't necessarily mean that anybody who does a mushroom basically converts to Hinduism, but what that means is they will be able, I think it can help people in basically seeing the old idea that was popular in India, that was popular in ancient Greece, ancient Rome, is that reality is one, truth is one. We just interpret it in different ways, and we don't have to necessarily fight over the correct interpretation of it. And it's possible to just respect each other's interpretation without necessarily being hostile towards each other. And I do think psychedelics can be a gateway towards that. Very interesting. Yeah. So श्याम, आपको क्योंकि सेक्युलरिज्म का सीईओ कहा जाता है, तो आज उस पर भी बात कर लेते हैं। Sure. आपको क्या लगता है कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो कहाँ पे फेल हो रहा है, और अगर ये जो इसका फेलियर है, क्या पॉसिबिलिटीज है उसको फिक्स करने की, तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं अगर पॉसिबिलिटीज है तो? I think failure, unfortunately, constitution से ही आता है. Constitution में आप आर्टिकल 29 और 30 जैसे sections को ही देख लीजिए, जहां पर certain institutions are given the right to run themselves however they want, but Hindu institutions जो हैं उनको वो अधिकार नहीं मिलते हैं, उनको 50-60 अदर से दूसरे कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं. And as a result of that, you're seeing कि Hinduism के within भी ऐसे sects हैं, communities हैं जो अपने आप को non-Hindu declare कर रही हैं, just so they are able to run their educational institutions however they want. दूसरी बात ये भी है कि आप देख लीजिए कि मंदिरों वाला भी देख लीजिए. That's such a big thing, that so many temples, major temples are within the purview of the government. And both those things make such a big difference in society, in my opinion, कि अगर आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर रहे हो वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हो, जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं वो पहले जमाने में कल्चरल सेंटर्स भी हुआ करते थे, गांव का सेंटर हुआ करते थे जहां पर द एंटायर कम्युनिटी गेट्स टुगेदर, एंड एक सोशल कोहेजन की प्रॉब्लम है मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल में डालने में. सो इतनी जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे देश में इतने साल से चली आ रही हैं, जब वही फिक्स नहीं हो रही हैं, फिर हम कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जब तक वो दो प्रॉब्लम्स नहीं फिक्स होती हैं तब तक सोसाइटी में तो ये प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी. सो अगर हमको बेसिकली इक्वालिटी चाहिए या एक तरह का सेक्युलरिज्म चाहिए, देन इन सब चीजों में बराबरी लानी पड़ेगी. इन सब चीजों में बराबरी लाने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ मोनोकल्चर, बिकॉज दैट्स अ बिग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट, राइट? कि ये सब करने का मतलब हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब हुआ कि आप मोनोकल्चर ला रहे हैं, सबको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू एट ऑल. इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन की, कल्चर की, सांप्रदाय टू सांप्रदाय इतनी डाइवर्सिटी होती है इंडिया में, तो I think even the Hindu community wouldn't want that kind of homogenization. So I think those problems need to be fixed. Those issues need to be fixed first and foremost. And I want to put that question to you guys as well, क्योंकि ये often बोला जाता है कि मुस्लिम्स को इससे सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि इससे homogenization हो जाएगी सोसाइटी की. Do you guys feel that as well? Because मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी आप अगर देख लीजिए तो वहां आपके रिलीजियस बिलीफ्स को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है. शादी में क्या होगा, इनहेरिटेंस में क्या होगा, उस तरह की चीजों को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है ना. So how do you feel about that? बेसिकली इंडिया का सेक्युलरिज्म तो पूरी तरह से ही गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल सेक्युलरिज्म होगा जो टर्की में अटातुर्क ने अडॉप्ट किया था, जहाँ पे स्टेट और उसका चर्च का कोई लेना देना ही नहीं है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके का सेक्युलरिज्म अपनाया है, जहाँ पे स्टेट हिंदू लॉज में या हिंदू के कोई भी पॉलिसीज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हुई आई है. बट द सेम टाइम वही सेम यार्ड स्टिक वो बाकी कम्युनिटी पे नहीं चलाती है. तो आप अगर चलिए ये वाला सेक्युलरिज्म नहीं भी अपनाना चाहते हैं, जहाँ पे स्टेट और जो चर्च है वो बिल्कुल अलग रहेगा, मतलब रिलीजन में ना हमारा लेना देना है स्टेट का, और ना रिलीजन स्टेट में कुछ करेगा, आप अपना पर्सनल फेथ अपने पर्सनल लाइफ में निभाओ, ये सबसे आइडियल होता जो मुझे लगता है. बट अगर हमने जब वो नहीं किया है तो कम से कम सेम यार्ड स्टिक तो रखना चाहिए था. तो हम सेम यार्ड स्टिक रखने में बिल्कुल ही फेल हो गए हैं. मुझे लगता है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड हाँ, यूसीसी से ये बात समझाना लोगों को कि उनकी
इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे डिमांड किया जा रहा है कि उनकी लाइफ सेम हो, आप एक दूसरे को कॉपी करो। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा सेम मोरालिटी के साथ। अगर एक हिंदू वीमेन को जो राइट मिले हैं तो वही मुस्लिम वीमेन को राइट मिलना चाहिए। सो फॉर मी इट्स इन सिंपल टर्म्स दैट। खालिद, हम्म। आपका क्या कहना है? मेरा भी सिमिलर ही है। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ अगर पला पड़ा हूँ एंड जो हिंदू क्रिश्चियन सिख रहे हैं, तो वी हैव आवर सेट ऑफ बिलीव्स। आई गो टू मॉस्क, दे वुड गो टू अ गुरुद्वारा, somebody go to a church, and there are millions of them in India. But of course in front of law all of us should be same, no? क्रिमिनल लॉ के तहत तो हम सब सेम ही है ना। तो ऐसा थोड़ी है आपके बिलीव्स पे कोई कोई ये कर रहा है। अगर वैसा नहीं है तो फिर आप कह लीजिए ना कि नहीं है, आप सेम कंट्री में नहीं है, तो फिर ये आइडिया ऑफ इंडिया इंडिया कहाँ चला जाता है? इट कांट बी डिफरेंट आइडिया ऑफ इंडिया फॉर हिम, डिफरेंट फॉर मी। तो एक रिकोर्स होना चाहिए वो। तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है देश की कि इतना हर चीज को आप पोलराइज और डराने की चीजें करते हैं, जो कि वास्तविकता से बहुत परे होती है। Yeah. बट आई होप, मतलब यूसीसी पे आमना ने काफी पैशनेटली कई सारे प्रोग्राम्स में बोला है। मेरा तो इस पे एक सिंपल सा नजरिया है कि हर चीज, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इट्स लाइक अ ओशन, फ्लूइडिटी है। हर चीज आप बात से कर सकते। हाँ, बाकी आपको वो एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच में रहना है कि नहीं नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं मानता नहीं हूँ। बिकॉज सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी की पॉपुलेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के पॉपुलेशन से ज्यादा है। 20 करोड़ वहाँ पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, और 20 करोड़ पाकिस्तान में। यहाँ मुस्लिम्स की 25 करोड़ है, राइट। थर्ड लार्जेस्ट क्रिश्चियन 5 करोड़ है। कई ऐसे देश है दुनिया में, 100 देश है जिनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ नहीं है। 5 करोड़ नहीं तो है। मैं ये सब मतलब ये एक तो फैक्ट्स होते हैं, एक होता है जो सबका आइडियोलॉजी चलता है। तो मेरा इस पे Yeah. नजरिया है। तो आप कीजिए, होंगे आपको इनहिबिशन, उस पर बात कीजिए। बाकी आपको कहना है कि नहीं हमको तो भाई कन्फ्रंटेशन में ही रहना है हमेशा मेजोरिटी से, तो वहां भी तो थोड़ा रिएक्शन आएगा ही ना। तो Yeah. राइट। जी अच्छा, हाँ। श्याम, आपसे मुझे ये पूछना था कि एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की काफ़ी बात होती है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ समझने का इसको, तो लोगों के अपने अपने डिफिनेशन आते हैं। एंड आई थिंक सबसे जो लोग ज़्यादा साइड करते हैं वो सावरकर जी को ही करते हैं। लेकिन Yeah. आपका आपका इस पे क्या है? आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है हिंदुस्तान में? That's a very interesting question, and I do agree mostly with the Savarkar definition. You know, the word Hindu is not just related to a particular religion. वो एक cultural identity है, एक political identity है, और एक geographical identity भी है. So in that sense, I completely agree with that definition. I can understand कि क्यों कुछ लोग हैं जो इस वर्ड को सुनकर घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसका डायरेक्ट कंपैरिजन एक रिलीजन से है, बिकॉज हिंदूज नाम की एक रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में. आई आई थिंक कि उनको ये बात समझानी जरूरी है, एंड अपनी तरफ से भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि हाउ पीपल लुक एट व्हाट ये पॉलिटिकल हिंदुत्व, कल्चरल हिंदुत्व क्या है. आई थिंक उसको भी समझना जरूरी है. मेरे हिसाब से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई पर्सनली कंसिडर माई सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ अ वंडरफुल ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन जिसने दुनिया को बहुत चीजें दी हैं, बहुत चीजें आज भी ये दुनिया को ऑफर करता है. ऐसे ऐसे समय पर जहां पर वेस्टर्न देशों में आप देखिए कि उनको लगता है कि लाइफ में हमारे पास दो ही चॉइसेस है. या तो हमारे पास एक चॉइस है कि हम एक थोड़ी एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजियस मेंटालिटी में रहें, या फिर हम लेफ्ट विंग में भी एक एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजियस मेंटालिटी में रहें, जिसको मैं वोकिज्म कहता हूं. तो इट्स आइदर वोकिज्म और इट्स लाइक अ रेडिकल सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. उसके बीच में भी देयर इज अ मिडिल ग्राउंड. You don't want to call it Hinduism, that's fine. You want to call it धर्मत्व, धर्म रिलेटेड, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो. आई थिंक जो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो आइडिया इंडिया ऑफर करता है, आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड आइडिया. इस तरह का कोई आइडिया नहीं है दुनिया में इंडिया के अलावा. अनफॉर्चुनेटली जिन देशों में ये आइडिया हुआ करता था, उन देशों को मिटा दिया गया है, या उन कल्चर्स को मिटा दिया गया है, मोर लाइक. तो आई थिंक इंडिया डज हैव दैट टू ऑफर, एंड दैट्स व्हाई आई पर्सनली बिलीव कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, द आइडिया ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट इंडिया प्रपोजेस. एंड even in India, I think culturally
इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसको लीगल टर्म्स में घुसेड़ दिया जाए या फिर इसको पॉलिटिक्स में जबरदस्ती लाया जाए। यू नो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आई हैव नो इश्यूज इन आल्सो सीइंग कि अगर आप वेस्टर्न देशों में देखिए तो इंग्लैंड जैसे क्रिश्चियन देश में आप देखिए कि एंशिएंट रोम और एंशिएंट ग्रीस को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से अपने कल्चर में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ये लोग, इतनी प्राउडली इनकॉर्पोरेट करते हैं। अमेरिका के जो फाउंडर्स हैं, जो उसकी फाउंडिंग फादर जनरेशन है, उन्होंने कितना प्राउडली एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम के टेक्स्ट को इंक्लूड किया है अपने कल्चर में, कितना ओपनली उन्होंने बोला है कि हम तो इन चीजों से इंस्पायर हो के ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लिख रहे हैं। यू नो, तो जब वो इन चीजों को से इंस्पायर हो सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, यू नो, इनकी जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन है उसको इन चीजों से इंस्पायर होके वो लिख सकते हैं, उसके बावजूद these स्टेट्स आर सेक्युलर स्टेट्स, तो इंडिया ये क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो अपने ग्रीक और रोमन कल्चर को बेसिकली अपना कल्चर मानते हैं। अगर वो उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे इंस्पायर होके अपनी जिंदगी जी सकते हैं, उससे इंस्पायर होके एक सेक्युलर, यू नो, एक हाईली सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर सकते हैं, और तो हम इंडिया में ये क्यों नहीं कर सकते? इंडिया में जो एक इतना यूनिक कल्चर है, जो दुनिया में और कहीं इस तरह का कल्चर नहीं है, इतना इतना यूनिक कल्चर नहीं है, क्यों उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता? या फिर जो इंडिया में लेट्स से नॉन हिंदूज भी हैं, वो कल्चरली अपने आप को एक भारतीय सिविलाइजेशन से जुड़ा होने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि उनको जबरदस्ती अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अडॉप्ट करना है। कुशल हिमसेल्फ, हम कुशल की बात कर रहे थे, कुशल इज ए कल्चरल हिंदू, वो तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, बट कल्चरली तो अपने आप को मानता है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स आल्सो दैट कल्चरली, हम लोग सबने देखा है कि यार जब होली दिवाली वगैरह होती है तो आके सेलिब्रेट करते हैं, सिख लोग आके सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम आके हमारे साथ होली खेलते हैं, है ना? तो जब कल्चरली ये सब है ही, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि अब उनको उनने एक बार होली खेली तो उनका नाम अब राम प्रसाद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक श्याम ये भी है ना कि कल्चरली लॉट ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, एवरीबॉडी सीज देमसेल्व्स कल्चरली हिंदूज, बट वही है ना कि पॉलिटिकली जब उनको बोलना होता है तो देन दे गेट लाइक ओ माय गॉड व्हाट विल माय कम्युनिटी एंड द लीडर्स एंड यू नो वो सब भी आ जाता है। Yeah, I mean, there's that example, right, of the मेवाती मुस्लिम्स का जो एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है कि ये लोग यू नो रिलीजियसली मुस्लिम है, बट इनके बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जो हिंदू से रिलेटेड हुए करते थे। इनकी औरतें जो थी शादी के समय पर सिंदूर वगैरह भी लगाती थी, लेकिन नॉमिनली ये लोग रिलीजियस से मुस्लिम है, ये लोग अपना मस्जिद वगैरह में जाके प्रार्थना वगैरह करते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया इज, वो है इंडिया बेसिकली। यहाँ पर unfortunately with the use of organizations like तबलीगी जमात, ये जो अरबाइजेशन करने की कोशिश है कि नहीं आप ये अपना चाचा जी का पजामा पहनिए या इस तरह की कपड़े पहनिए, या भारत की गर्मी में जहां पर कोई उस तरह से बालू नहीं उड़ रहा है वहां पर आप बिहार जैसे स्टेट में पूरा तंबू पहन के आइए। ये इंडिया में कोई इस बात का सेंस नहीं बनता है कि ये जबरदस्ती, ये जो एक डिफरेंस क्रिएट करना है जबरदस्ती, दैट इट डजंट रियली मेक सेंस टू मी। More Arab than Arab. Yeah, basically. And you still remain inferior to them, but समझते नहीं है लोग। क्या करें, वहां पे जाके आईसीस में जाके टॉयलेट साफ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो हम भाई तीसमार खान है, क्या करें। ये Sham, एक और question, one wanted to know, since you're a civilizationalist, what is a country that you look up to, which you think some of its civilizational values or the way it's progressed and, with the 21st century, whatever leaps it's made in technological advancement or anything, which India could borrow some of its qualities, and what are those qualities, and which, on any front, whether it is warfare, whether it is technology, whether it is keeping their best civilizational values, which country would that be which you would want India to imbibe some of the qualities? Yeah, again, I'll have to pick and choose from certain countries as well. For example, मैं यहाँ US में रहता हूँ. One of the things I really, really love about the US is its freedom, is its support for freedom of speech. कि आपको जो बोलना है, as long as you're not advocating for violence, हम मर जाएंगे लेकिन support जरूर करेंगे. And that's something I've always admired. I will admire till the day I die. I think that's a wonderful thing that the United States has, that India really, really should learn to develop in its own country. The second thing
I really admire is in Western countries. आप देखोगे जैसे European countries में, for example, America थोड़ा different है because it's a frontier country. But in the old European countries में, if you look at it, they're very proud of their, जैसा मैं पहले कह रहा था, they're very proud of their sort of Greek and Roman heritage. They have, they acknowledge it, they celebrate it. उनके statues वगैरह लगते हैं, you know, उनके it's studied, उसको celebrate किया जाता है. So that thing I really admire about जैसे the British के बारे में अगर आप देखोगे तो they really admire their culture. They really admire these classics and these ways of thinking. So I admire that. Germany में अगर देखोगे तो Germany thinks of themselves as a liberal country, as a highly developed country, great support for capitalism, but at the same time they're very culturally aware. उनको पता है कि हम culturally क्या हैं और हम इसको celebrate भी करते हैं. We don't need to make any apologies to anyone. I'm not talking about the Nazis. I'm talking about today's Germany, obviously. So उसमें भी अगर देख लो, another thing about Germany that I really like is, again, this is a country that has a great love for capitalism, जो बहुत support करती है capitalism को, but at the same time they have a very high level of public spending, जो कि US में उतना high नहीं है. But Germany has a very high level of public spending. वो colleges free में colleges को support करते हैं, students को healthcare में इतना support करते हैं लोगों को. Very high level of public spending, which I see that in India as well. उसका कुछ shades I see in India, and I really do support it. That's not the libertarian way of doing things, but I like the way that these Scandinavian countries and Germany, that they support their public with their public spending. Sham, now another question would be that currently, in the current set of politicians, one leader you admire, you're in awe of, and what are the qualities that you like about him and the achievements? Well, I think saying Modi ji is the boring answer because, most people will say I admire Modi ji. I also do. I have a great amount of admiration for him. But if I had to pick like a sort of outside pick, a non-Modi pick, I would pick a guy like Hemant Biswa Sharma. Again, this is a self-made guy. He's not handed a silver platter, who has built himself into genuinely a national leader from a state like Assam, because Northeast used to be the forgotten area of India. किसी को पता ही नहीं Northeast में क्या हो रहा है. Now there's a leader from the Northeast who everybody looks up to. This guy इसका सब interview लेने के लिए आते हैं. He's turned Assam around. He's जब भी इससे डेवलपमेंट की बात की जाती है, he's always like, look, I want to develop everybody. ठीक है, मैं मुसलमानों को भी डेवलप करना चाहता हूँ, हिंदुओं को भी डेवलप करना चाहता हूँ. आपको अगर लगता है कि मदरसे में आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो ठीक है, but my job is to make sure that I give development to everyone. And this guy is a leader that's genuinely emerging as a national option for the BJP, like Yogi Adityanath. So, and from a state like Assam, so yeah, major props to him. श्याम, आपका क्या मैसेज होगा जो भी यंगस्टर आ रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और जो नेक्स्ट श्याम शर्मा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स? उनके लिए टिप्स, अब मैं तो उनको यही बोलूंगा कि look, the first thing that you need to do is just start creating content. आपका वीडियो चलो अच्छा नहीं भी हो, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कैमरा अच्छा नहीं हो, माइक अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं, और none of that stuff matters. शुरू कर दो बस. A lot of people get into this analysis paralysis कि ये perfect होना चाहिए, ये perfect होना चाहिए, एकदम कैमरा मेरे पास सबसे expensive वाला होना चाहिए. None of that is important. वो सब आता रहेगा धीरे धीरे. पहले focus करो content पे and just start putting out content. That's the first thing I'll offer. Because that's what happened with me as well. I spent 6 months thinking about making a YouTube video before I made my first YouTube video. So पहले बना दो. Then you can improve on it. The second thing I'll say is, I think I'm the only person that will offer this advice, is don't take yourself too seriously, because YouTube पे बहुत serious लोग हैं यार. And I find it endlessly hilarious how seriously people can take themselves. कोई भी रोमू चोमू आता है YouTube पे, बिल्कुल seriously एकदम आके बैठ जाएगा कि भारत में ये हो रहा है, मेरी आवाज सुननी जरूरी है, please listen to me. And it's impossible for me to take those people seriously. It's impossible for me to take myself seriously if I start acting like that on YouTube. And if I do start acting like that on YouTube, मेरे को YouTube पे गालियां मिलनी शुरू हो जाएंगी. अबे साले चुप हो जा, तू मीम बनाता था, अब यहाँ पे ज्ञान पेल रहा है. So my personal advice is, please don't take yourself seriously. Learn to have fun, because if you don't,
laugh, if you don't have fun, then YouTube पे exist करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए for the long run, you know. Maybe some people can do it. There's a lot of self-serious people that have huge channels and a lot of success. So maybe that's fine for them. But for me and people like me, I think it's very important to learn to laugh at yourself, learn to have a good time. And that has helped me through like difficult periods on YouTube, good periods on YouTube, everything. And the third thing I'll say is like, don't be afraid to change your mind. Don't be afraid to change your opinion. Don't be afraid to make a mistake. गलती हो जाती है. आज आप कुछ सोच रहे हो, कल आपको कुछ नया evidence मिलेगा, then it'll change your mind. So don't be afraid to change your mind. कुछ गलती हो जाती है तो you don't have to stick to it. कि नहीं, ignore करो and keep doing this. That's my problem with a lot of the people on the left as well. कि you were wrong about a certain things, just accept करके आगे बढ़ जाओ यार. Why do you have to keep वही पुराना डंका क्यों बजाते रहना? You know, change your mind when new information comes up. So yeah, I think these three things will be the most important thing. कि just start, करना शुरू कर दो. Number 2, learn to laugh. Don't take yourself too seriously. And number 3, yeah, don't be afraid to change your mind. And number 2, I can't stress highly enough because I can't tell you, यार, Amna and Khalid, मैंने कितना content देखा है YouTube पे जिसपे लोग एकदम इतने seriously बैठते हैं. And to make matters worse, साला उनके पीछे serious music भी बज रहा होता है. You know, there's actually serious music playing behind them, like, and then they're all like talking, मोदी जी के साथ ऐसा हुआ. I'm like, यार ये क्या है? What is this a parody? Honestly, I have to check to see if this is a parody channel. But no, this is a completely serious channel. So please, इस ऐसे cringe से देश को बचाइए. Sham, continuing on that, not many people must have asked you this, and we want to take the opportunity since the show today is about Sham. Sure. Tell us some of the weirdest and funniest fan mails, fan inbox messages you've got. 4 to 5. It's always funny. Sometimes, you know, I don't get like very crazy fan emails. I just get like, the funniest stuff that I get is that I'll get like a email that shows me an Instagram page with like 2 followers, and they'll say, इसने इंडिया के खिलाफ बोल दिया है, please expose him. मैं कह यही काम रह गया मेरे पे यार, मैं Instagram पे जाके एक चैनल ढूंढूं and then उसको expose करूं. Been to memes with 10 followers exposed by Sham Sharma. मतलब यही काम रह गया मेरे पास. एक मेरे को वो उस तरह के वीडियोस बहुत सारे आते हैं. दूसरे मेरे को वीडियोस आते हैं that some people will like want to be on a podcast with me sometimes, and मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने कोई किताब लिखी है या कोई किताब लिख रहे हैं, या is there some kind of stuff that you're producing that you want to talk about? And then they're like, नहीं बस ऐसे ही, I just want to come on your show and do a podcast with you. Yeah. Talk about taking it. There's one level of taking yourself seriously, and then this is another whole different level. So those are the weirdest ones that I get. I don't think I get the usual sort of गालियां तो पड़ती रहती हैं कि चल साले संगी, those kinds of things. But that every YouTuber probably gets. You guys probably get a fair share of that yourselves, you know. So, but yeah, the craziest ones are those ones. कि sir, please, इस Instagram वीडियो को देखिए जो किसी चुन्नू मुन्नू ने डाली है, please expose it. अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल. And a lot of those fans जो मतलब हर कुछ हफ्ते बाद want to like just inbox में hi Sham and waiting for your response. Yeah, you get that as well. I try to respond to as many as I can, but sometimes yeah, the hi Sham का क्या response दूं मैं? You know, yeah. All right, Sham, it was great having you, and thank you for coming on the show and making us have so much fun. And I think that's the greatest entertainment one can do, especially coming from an intellectual fervor and mixing it. And we hope and pray you get to 10 million subscribers. Oh, thank you. And then become the super CEO of secularism. So thanks then I'll become chairman of secularism बोलना पड़ेगा उसके हाँ, फिर जब आप चेयरमैन बन जाइएगा तो हमें सीईओ हायर कर दीजिएगा या सीएफओ. Definitely, 100%. Yeah, 100%. Because फिर वो secularism की जगह खत्म हो जाएगी ना, तो then we can. वो कंपनी ग्रो करनी पड़ेगी ना फिर, तो सीएफओ भी चाहिए, सीईओ भी चाहिए, social media manager भी चाहिए, all those things we need. Exactly, and you need 2 सरकारी Muslims as well. Exactly, the minority quota भी तो भरना है ना. Yeah. Right. All right, thank you everyone for watching. Please like, share, and subscribe our channel. And thank you. Have a great time.